billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we will continue the chapter Vector and Scalars, test 2.3. Some properties of the vectors. Regarding that, we have to solve some MCQs. So the first MCQs: if v1 plus v2, these are the two vectors, their magnitude is equal to v1 minus v2, their magnitude. That means the magnitude of the sum of the two vectors is equal to the magnitude of the difference of the two vectors. They both have the same magnitude, and if v1 and v2 are finite, that means they are non-zero vectors, then what is the condition that we have to find? So dear students, you know that the resultant magnitude of sum, let's suppose this one is v1 plus v2 sum, and their magnitude is always equal to v1 square plus v2 square, means square of their magnitudes, plus twice v1 v2 and cos theta. Theta is the angle between the two vectors. So this one is the formula for sum, and for the difference only, v1 minus v2, their magnitude will be equal to, in a same pattern, we have v1 square plus v2 square, and over here minus 2 v1 v2 cos theta. So the condition that v1 square plus v2 square, that one is the same in both formulas, only the difference in the third part. So if this third part becomes a 0, that means v1 plus v2, their magnitude will be equal to the magnitude of the difference. So आप याद रखें, यहाँ पे ये जो दो फार्मूले बने, इसमें से अगर ये जो है आपके पास 2v1 v2 cos थीटा, अगर ये पूरा 0 हो जाए तभी इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है. अब क्योंकि v1 और v2 तो नॉन जीरो है, तो फाइनाइट है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मल्टीप्लाई करने से ये पूरा टर्म 0 हो सकता है. सो उसके लिए हमें cos 90 जो होती है वो बराबर होती है, यानी सपोज करें यहाँ पे आप देखें cos 90 डिग्री जो होती है वो बराबर किसके होती है? 0 के. उसका मतलब है अगर v1 और अगर लेट सपोज v1 और v2, let's suppose this one is a v1 vector and this one is vector v2. If this angle is 90 degree, then this condition will be satisfied. So it shows that when the angle between the two vectors is 90 degree, then the magnitude of the sum is equal to the magnitude of the difference. So 90 degree means perpendicular to each other. So in this regard, the option D is a correct answer because they are mutually perpendicular to each other. So this one is the correct answer. Now the MCQ is number 2. This one basically is a numerical. If a force of magnitude 10 Newton acts on a body in a direction making an angle of 30 degree with the x-axis, its x and y components are. So बेटा यहाँ पे देखें, एक फोर्स दी गई है, एक फोर्स यहाँ पे गिवन है. फॉर एग्जांपल F is given, that's equal to 10 Newton, and angle is also given, theta is given 30 degree. And so you have to find x and y components, means you have to find fx is equal to what and fy is equal to what. So that one is a required.
So you know that when the angle is with x-axis, then fx is equal to f cos थीटा। तो याद रखिएगा जिसके साथ कोई फोर्स या कोई वेक्टर एंगल बदलता है उसके साथ cos थीटा आती है, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स के साथ हमेशा sin थीटा आती है। और अगर यहाँ पे लिखा होता ये जो आपको नजर आया 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, यहाँ अगर लिखा होता y एक्सिस तो y कंपोनेंट के अंदर cos थीटा आती। सो अब आपने मालूम क्या करना है, f इज गिवन हाउ मच 10 into cos 30 degree. So that means that one is a 10 into cos 30 की वैल्यू होती है 0.866. So that means this is equal to 8.66. This one is a x component. In a same pattern, we have to find the next one. That one is y component. So when you talk about the y component, so fy that is equal to f sine theta. So again we put the values, that's equal to 10 sine 30 degree. So we know that sine 30 is equal to 0.5 or 1/2. So that's equal to 5 Newton. So these are the two options. In the first option 5 Newton and 8.66 Newton. Both answer as present, but in question it's x and y component. That means you have to put the value of the x component and then y. In a second 8.66 and 5. So this one is the correct answer. Why? Because x component is its x component is 8.66 and y component is 5 Newton. So this one is the correct answer for question. The MCQs number 3 is given. The sum of a vector b and its negative vector minus b is, remember one thing, there are the two vectors given. One is given as vector b. Let's suppose this vector b is given like this. This one is a vector b and sum, that means you have to add which vector? Minus b. And then what will be the answer? Vector b plus into minus minus vector b. So answer will be 0. So a vector whose magnitude is 0 and it has any direction is known as a null vector. So option A is a correct answer for this. That means the sum of the vector b and its negative vector is, whenever the vector is added to its negative vector, the sum is always become 0. So that means that shows the null vector. Now the MCQ is number 4. The maximum number of the rectangular components into which a vector can be split. First, the rectangular components. जब हम rectangular components की बात करें उसका मतलब ऐसे components की जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री की हो, उनको हम क्या कहते हैं? rectangular components. So when there is a plane, अगर कोई plane होता है, that one is known as the two dimension. So वहां पे तो दो components हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं maximum कितने हो सकते हैं? तो याद रखिएगा rectangular component जो किसी भी vector के maximum होते हैं वो 3 होते हैं, क्योंकि x along the x axis, y axis and z axis. You know that x axis, y axis and z axis 3 are mutually perpendicular to each other. So that means the option B is a correct answer. Maximum rectangular components kitne ho sakte? MCQs number 5. Which of the following quantities are vectors? 4 options are given. You have to find out which option contain all the vectors. पहला ऑप्शन जो आपका ए है उसमें टाइम एंड मास दे बोथ आर स्केलर्स. टाइम भी स्केलर होता है और मास भी स्केलर. सेकंड बी में टेम्परेचर स्केलर है और डेंसिटी भी स्केलर है. सी में फोर्स वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है. डी में लेंथ स्केलर है और वेट वेक्टर है. सो सी इज द ओनली ऑप्शन विच कैरी द बोथ क्वांटिटीज एज अ वेक्टर. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन. कौन सी
वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दिस वन इज अ आंसर force and accelerations. Option C is a correct answer for question number MCQ number 6. Vector addition is dash in a nature. So when we talk only about the vector addition, that obeys the associative law, that also obeys the commuted law. But for the distributive law, you need the two operations, algebraic operations, addition, as well as have need of multiplication. So that means only A and C are correct choices. So in option D, the answer is given as both A and C. This one is a correct answer for this. Now the MCQ is number 7. The sum of the two vectors equal in magnitude but opposite in a direction is less than the individual vectors, greater than individual vectors, equal to the individual vectors, or zero. Remember one thing, when the two vectors have the same magnitude and opposite in direction, they are known as the negative of each other. So ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के अगर नेगेटिव हो उनका सम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनका सम हमेशा जीरो बनता है. एमसीक्यूज नंबर 8. टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, यानी यहाँ पे दो फोर्सेस दी गए हैं. सपोज करें F1 है, दूसरी F2 है. F1 का भी मैग्नीट्यूड F है और F2 का मैग्नीट्यूड F है. ईच एक्सर्ट्स द फोर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी हर फोर्स जो है F1 और F2, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितनी है, राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री की है. व्हाट इज द रिजल्टेंट? सो रिमेंबर वन थिंग, कि जब आपके पास दो फोर्सेस के बीच में एंगल जीरो होती है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वो बराबर हो जाता है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड. सपोज करें F1 प्लस F2 के, अगर सेम डायरेक्शन हो या जिनको कहा जाए पैरेलल फोर्सेस हो, सेम एक डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट का जो है वो बराबर होता है डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस F1 माइनस F2 के. लेकिन अगर आपके पास एट राइट एंगल है, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के वजह से जो रिजल्टेंट मालूम करते हैं, R इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. दिस वन इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो अगर यहाँ पे आप देखें R इज इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, दैट मीन्स F स्क्वायर, प्लस F2 का भी मैग्नीट्यूड F था, सो F2 स्क्वायर. तो अगर आप इसका निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2F2 स्क्वायर का रेडिकल. सो रिजल्टेंट आपके पास हो जाएगा रेडिकल 2 इंटू F, ऐसे लिखें आप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इंटू रेडिकल 2. सो दिस वन इज द फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट. अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आपके पास मौजूद है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. Now the MCQ is number 9. Unit vector of a P. A vector P is given and you have to find the unit vector of this P. So याद रखिएगा, ये जो वेक्टर P मिला हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर. सो अगर आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात करें, सो यूनिट वेक्टर, लेट सपोज दिस वन इज अ P, ये कैप शो करती है यूनिट वेक्टर को, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू अ वेक्टर, जो वेक्टर हो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इसको सिर्फ P से हम शो कर सकते हैं, या इसको आप इस तरह से मॉड ऑफ P भी शो कर सकते हैं. तो याद रखिए, ये जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, लेट सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P, दैट्स इक्वल टू, इसका फार्मूला यहाँ पे आई जे के, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, इसके आगे कुछ नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है. यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 मीन्स 1. ये इसका बेसिकली फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट. लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स है क्या चीज़,
जो आई का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम एक्स कहेंगे, जे के साथ जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो शो होगा उसको हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे, और के साथ जो जेड कहेंगे। सो अब अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मालूम करें पी का, तो दैट्स इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 है, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, रूट। सो यहाँ पे आपके पास हो गया p इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 and then root. So magnitude of this p is equal to radical 3। तो अब अगर इस फार्मूले में आप देखें, इसको आप p से ऐसे सिर्फ p से भी शो कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसको भले मॉड में लिखना चाहें तो उसी तरह से मॉड में लिखते जाएं, इट्स ओके। सो आपने फार्मूला यहाँ पे आपके सामने है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ p जो है वो बराबर आपका हो गया वेक्टर p और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड अभी आपने फाइंड किया, क्या, रेडिकल 3। सो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है आपका, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। Now the MCQ is number 10. The two forces of 10 Newton each acting on an object, the resultant is 20 Newton. Then the angle between them is, तो शायद आपको याद हो, मैंने अभी एक न्यूमेरिकल के दौरान हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में है तो फिर जो है मैग्नीट्यूड प्लस हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था F1 प्लस F2 तब होता है जब डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये होता है, आपके पास सेम होने का मतलब ये होता है कि उनके बीच में एंगल जो आपकी है वो क्या हो जाती है, 0। तो आपने देखा यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरे का भी क्या है, 10 न्यूटन है, तो दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 20 न्यूटन। तो आपने देखा रिजल्टेंट क्या है, 20 न्यूटन। इट मीन्स दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब है थीटा जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, या आप कह सकते हैं दोनों वेक्टर्स क्या हैं, लाइक पैरेलल हैं। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर।